just give a few comments on one of the perhaps most confusing topic that we have studied in this course so far, and that was the equivalence principle and general relativity. ठीक है, उसमें पहले तो ये है कि जैसे भी इनका सवाल था कि स्पेस टाइम क्या है, तो स्पेस टाइम का हम वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि टाइम जो है वो फॉर ऑल ऑब्जर्वर सेम है। आप स्टेशन पे हैं या ट्रेन के अंदर हैं, दोनों का क्लॉक सेम रेट से चल रहा है, तो सबके ऑब्जर्वर के टाइम सेम है। तो टाइम जो है वो लेंथ से इंडिपेंडेंट था। वी हैड स्पेस एंड टाइम, एंड स्पेस इज लाइक लेंथ एंड दोज थिंग्स। और उसमें टाइम सेम होने का जो एक वो था कॉन्सिक्वेंस वो ये थी कि अगर एक ये वेक्टर है, ठीक है, वो डिफरेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं, फर्ज करें कोई यू ओरिएंटेड है, कोई यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हो सकता है वेक्टर यू हो, किसी के लिए वेक्टर यू लगे, लेकिन लेंथ जो है वो तमाम ऑब्जर्वर के लिए सेम। वेक्टर के कंपोनेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट थे, लेकिन लेंथ सेम। अब हमने स्पेशल थ्योरी में ये देखा कि लेंथ और टाइम दे आर नो इंटरवाइंड। द टाइम डायलेशन is equivalent to length contraction, and length contraction is equivalent to time dilation. So that's why we use the word space-time, which means that three components of space of any event, for example, यहाँ पे कोई फ्लैश होता है, तो देखिए ना चार चीजें इसका एसोसिएटेड है। तीन स्पेशल कोऑर्डिनेट, इसका x, y, z क्या है, और ये किस टाइम पे हुआ। तो इससे पहले ये टाइम और स्पेस की दोनों चीजें अलग-अलग समझाती थी। Now we think of them as like four coordinate of a single event. So instead of talking about point in space, we talk about an event in space time. और उसका रैशनल ये है कि स्पेस एंड टाइम आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट थिंग। जिस तरह के कोई वेक्टर है, कोई भी वैल्यू इमेजिन करें, उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने एक्स एक्सिस यू ली है या एक्स एक्सिस यू लिया, तो कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन वेक्टर वही है, उसकी लेंथ भी वही है, तो वेक्टर के कंपोनेंट डिफरेंट है। तो इसी तरह आप स्पेस टाइम में हम इमेजिन करते हैं कि एक इवेंट है, तो उसका एक हाइपोथेटिकल आप एक वेक्टर समझ लें जिसके एक्स, वाई, जी और टी कंपोनेंट्स है, देन वी डिफाइन लेंथ इन अ सर्टेन वे दैट लेंथ रिमेन्स द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। So we are not going into those details, really speaking how to work with space time. So for now you can make your understanding based in length contraction and time dilation, because they are two facets of the same thing, so we call it space time instead of space. But still you can imagine it in the same way, that there is space in which there is position of something and then different things happen at different times. तो वो उसी तरह से वैलिड है, ये नहीं कि स्पेस टाइम कोई नई चीज है। इट इज स्पेस जिसमें कोई भी चीज से मूव कर रही है, उसकी कोई पोजीशन है और उसकी पोजीशन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। अभी भी यही सिचुएशन है, लेकिन अब ये है कि वो टाइम कितना गुजरा है और लेंथ कितनी है। दीज टू थिंग्स आर नो रिलेटेड एंड दे डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्लासरूम में खड़ा है या एक स्पेसशिप में जा रहा है। So that's why we call it space time, but still space and time are two different things in this sense, that space the position in space and time is some time at all. Okay, so there are a lot of things in this question, and what I'm trying to do in these lectures, trying to keep things simple. So अभी जो मैं बात कर रहा था वो सिर्फ स्पेस टाइम स्पेशल रिलेटिविटी। फिर दूसरा टॉपिक जो है वो हमने स्टडी किया था ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का। उसमें मैं थोड़ा सा एक मिनट में रीकैप करता हूँ, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको दो सवाल होमवर्क में दूंगा जो उस चीज को यूज करेंगे। हमने ये किया था दैट लेट्स से यू आर इन अ फ्रेम, weight is at rest, but there is a gravitational acceleration downward. So because of equivalence principle, we said that this thing is equivalent to a frame which is accelerating with the same acceleration but in a region where there is no gravity. ये फर्क करें अर्थ के ऊपर है, यहाँ पे ग्रेविटी है but things are stationary. एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर B, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर A. So because of equivalence principle, this situation is equivalent to a frame which is accelerating
but it is in a region of space जहाँ पे कोई gravity नहीं है. So these two things are equivalent. और मकसद हमारा था ये कंप्यूट करना कि अगर यहाँ पे कोई टाइम इंटरवल है TB, दो इवेंट हुए, फर्ज करें यहाँ पे मैंने एक टक किया, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा टक किया, एक टाइम इंटरवल है. सो एक ऐसा ऑब्जर्वर जो छत पे है उसके लिए ये टाइम इंटरवल कितना है, ठीक है. उसके लिए मैंने कैलकुलेशन की हुआ ऐसे कि आई टुक, जब पहला इवेंट हुआ तो एक लाइट पल्स यहाँ से निकली, वो इसके पास गई, फिर जब टाइम इंटरवल TB गुजरा फिर दूसरी पल्स यहाँ से निकली जो कि इसके पास गई, और इसके लिए टाइम है जो दोनों पल्स रिसीव करने का टाइम डिफरेंस है. तो उसकी डिटेल LMS पे अवेलेबल है, आप वो जाके चेक करें. और वो हमने इसी तरह से की थी, जब पहले T0 पे पहली पल्स यहाँ से निकली, तो चूंकि फ्रेम मूव कर रहा है तो पहली पल्स जो है वो एक तो उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस थोड़ा सा ज्यादा. फिर जब दूसरी पल्स निकली तो ये पॉइंट यहाँ पे आ चुका था, इससे पल्स निकली तो इससे जो लाइट ट्रेवल करती हुई जब ऊपर गई तो उसने ये लेंथ प्लस थोड़ी ज्यादा ट्रेवल की. आपने जो होमवर्क में प्रॉब्लम करने होंगे वो बेसिकली यूं होंगे. एक प्रॉब्लम होगा जिसमें आई विल गिव यू अ लेंथ, अ रॉड ऑफ लेंथ लेट्स से L1, या इसको मैं LX कह देता हूँ, और आपने ये मेजर करना है कि जो ऊपर ऑब्जर्वर है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो कितनी लेंथ मेजर करेगा. उसका तरीका होगा दैट यू सेंड अ पल्स फ्रॉम हियर एंड अ पल्स फ्रॉम हियर एट द सेम टाइम इन दिस फ्रेम. वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये ऑब्जर्वर जो है वो जहाँ पे उसको पल्सेस मिलेगी वो उनके डिफरेंस से लेंथ मेजर कर लेगा. एंड आप इसको करेंगे कैसे, इक्विवेलेंटली हियर दैट यू हैव अ रॉड इन दिस एक्सेलरेटिंग फ्रेम, इट गोइंग अप, और जब इसको रिसीव होगी इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस वो कर लेगा. लेकिन जो कि मोशन इंस्ट्रक्शन में नहीं है, यू कैन इमेजिन दैट इट विल मेजर द सेम लेंथ. लेकिन एक दूसरा भी होमवर्क प्रॉब्लम होगा, वो इस तरह से होगा दैट व्हाट हैपेंड टू द लेंथ ऑफ अ रॉड व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से इसकी लेंथ Ly है. तो उसका भी तरीका वही है कि ऊपर वाला ऑब्जर्वर कैसे मेजर करेगा, कंट्रैक्ट होगी, यस गुड, या डायलेट होगी, आई डोंट नो, दिस इज वन यू हैव टू फाइंड आउट. सो करेंगे कैसे, यहाँ पे दोनों एंड पॉइंट से एक पल्स निकलेगी एट द सेम टाइम, और जब दोनों पल्सेस इसको मिलेंगी तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है वो ये कर रहा है, चलिए इधर बना देते हैं, उसको जब पहली पल्स मिलेगी वो अपने पास टाइम नोट कर लेगा, जब उसको दूसरी पल्स मिलेगी वो अपने पास टाइम नोट कर लेगा, और उस टाइम डिफरेंस को वो C से मल्टीप्लाई करके इसकी लेंथ निकालेगा, आप भी निकालेंगे. एंड इन फैक्ट द लेंथ will turn out to be more than what is here. आपने ये फाइंड करना होगा कि कितनी ज्यादा है. अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ यहाँ पे है ग्रेविटेशनल फील्ड के पास, वो दूर वाले ऑब्जर्वर को ज्यादा नजर आ रही है. तो इसको आप पिक्चर कैसे करेंगे, यहाँ पे एक, क्योंकि आई कैन ड्रॉ इट इन 3D, ये एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो लेंथ है वो दूर से या कोई भी और ऑब्जर्वर है असल में उसको ज्यादा लगेगी because of gravity and because of the equivalence principle. हाँ, क्योंकि it's accelerating. जी जी. तो वो तो अगर तो सिर्फ एक्सेलरेशन ना हो और कांस्टेंट वेलोसिटी तो टाइम डिफरेंस इतना ही रहेगा, तो इट विल मेजर द सेम लेंथ. बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन इट विल मेजर मोर. ओके, सो इसको पिक्चर अब यूं करें कि ग्रेविटी ये करती है कि जहां पे एक ग्रेविटेशनल मैस है, इट डायलेट्स, इट एक्सपेंड्स द लेंथ रेडियली आउटवर्ड, लेकिन जो इस डायरेक्शन में लेंथ है वो सेम रहती है. तो उसको मैंने, बल्कि उसने ब्रायन ग्रीन ने भी लास्ट टाइम जब आपने देखा था कैसे 2 डायमेंशनल में कैसे प्रेजेंट किया था, दैट द स्पेस टाइम, द स्पेस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्पेस, seems like this, that if you put a mass here, तो जो ये अगर इसको आप टॉप से देखें, if I see from top, so let's say there is no mass, यहाँ पे कोई mass नहीं, तो ये लेंथ भी उतनी ही रहेगी, ये लेंथ भी उतनी रहेगी. What does the mass do? अगर यहाँ पे मैं mass put कर दूं तो ये जो mass है इस लेंथ को स्ट्रेच कर देगा, ठीक है, और ये स्ट्रेचिंग उतनी ज्यादा होगी जितना करीब होंगे, लेकिन इस लेंथ को कुछ नहीं करेगा. दिस इज इक्विवेलेंट टू शोइंग दैट दिस सर्कल हियर हैज द सेम सर्कमफ्रेंस, लेकिन जो नेक्स्ट सर्कल है उससे इसका जो फासला है वो बढ़ गया. सो दिस डिस्टेंस
has increased. So ये सेम रहेगा, ठीक है? This is the transverse direction. तो ये देखें, ये 1 2 3, let's say 1 2 3. तो 1 2 3. तो अगर तो फ्लैट स्पेस है, कोई मैच नहीं है, तो ये लेंथ जो भी है और ये लेंथ है, जब मैच रखेंगे तो ये लेंथ तो सेम रहेगी, because this is transverse, और ये लेंथ लंबी हो जाएगी. उसको शो करने का एक तरीका ये है 2 डायमेंशन में, इट्स अ 2 डायमेंशनल कट, कि आप यूं कर दें कि दिस लेंथ, ये जो डिफरेंस है ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैं 2D में तो इसको शो नहीं कर सकता इंक्रीज को, या आप बल्कि कर सकते हैं, आप कहें कि यूं हो जाता है. Because in this direct dimension, अगर आप इसको इक्विवेलेंस प्रिंसिपल से देखें, ये दोनों at the same time जा रही हैं, तो they will reach at with the same difference. नहीं, लेकिन वो ट्रांसफर डायरेक्शन में सेम है. Even this picture is showing the same thing. कि ये सर्कल वही है जो यहाँ पे है. नहीं, क्यों छोटा होगा? नहीं, लेकिन ये डायमेंशन स्ट्रेच हुई है ना, ये वाली, इसको तो कुछ नहीं हुआ. आप ये इमेजिन करें कि सर्कल तो आपने एक प्लेन में रखा है, एक सर्कल, बड़ा सर्कल, फिर मैथ ये करती है कि जो अंदर वाला सर्कल उसको थोड़ा नीचे कर देगी, जो उससे बड़ा सर्कल वो थोड़ा नीचे रहेगा, लेकिन सर्कल वही रहेगा, वो चेंज होगा. अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये बात जो है वो खत्म करना चाहता हूँ. उसकी वजह ये है कि दिस इज टू लो अ क्लास एंड वी हैव ऑलमोस्ट जीरो मैथमेटिकल बैकग्राउंड टू गो मच डीपर इनटू दिस थिंग. ठीक है, तो आप वो होमवर्क प्रॉब्लम करेंगे, उससे मेरा जो आइडिया है तो थोड़ा सा आपको ये हिंट देना कि जनरल थ्योरी कैसे वर्क करती है. बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी द मेन थीम ऑफ दिस कोर्स. सो आई नो दैट मेनी ऑफ यू हैव मेनी मोर क्वेश्चन and I'm available after the class and in my office, and you can talk to me about as long as you want. Today our focus is actually something else, which is even more bizarre than what this thing is, because this general relativity was just an attempt to explain what people already knew, the gravity. Newton told us that every two masses attract each other with this much of strength. So this was an attempt to see how gravity works, and also it improved that mathematical relation. But let's now get back to the same historical picture that we were developing last time. And as we saw that in early 1900s, Compton effect and photoelectric effect has forced this thing upon us that we have to consider light as some sort of particles instead of waves with energy hf and momentum h lambda. If we make these assumptions, those effects were explainable. And as we have seen in the recitations that before this idea of particles of light, there was this general consensus that light behaves as waves. And this was because there are many trillions of photons normally that are going on. So the question is, why did several experiments still tell us that light has some form of wave nature? So that's what is going to be our target today, and I hope that by the end of this lecture we are able to resolve this riddle and you have a clear concept of what we mean by wave-particle duality, and in what sense we say that photons and electrons and protons and neutrons are particles, and in what sense they are waves. Okay, and to do that, let me just first recap the results and then I will explain the rationale. So this was the general consensus about photons, that light consists of photons with discrete energy hf and momentum s. Around the same time, another person, Broglie, who was a PhD student at that time, he postulated that if these wavy things can be postulated and they appear to be as particles in some experiments, so maybe the particles, let's say electrons or protons,
are neutrons which were discovered and initially thought to be like particle in ordinary sense. Maybe they also can behave as wave. And he proposed this relation that there is an associated wave, and this is given as h over p, the wavelength of this wave, and the frequency is given as the energy over h. So essentially, these two are exactly the same relations. But what his conception of wave was is not what we accept today to be true. So I'm not going to say what he meant by the wave, but he gave these expressions for associated wavelength and frequency. And to be precise, these are valid only for free particles. This one? So he was a PhD student. Yeah. So this was actually a prediction from his thesis. So no. They are massive particles. So electron, proton, and from free particle I mean the particles that are not feeling any force. For example, you shoot an electron from there and it's going like this, and this is almost a vacuum. There's nothing that is affecting it. That's a free particle. We will learn how to find the associated wavelength and frequencies for particles that are not free later on. So this was his prediction, and people were looking for experimental proofs, and the first experimental proof for the wave nature of particles, which were previously called particle, was actually came from this simple experiment by Davison and German. And the experiment was very simple. It was based on this idea that if these particles behave as wave, we should be able to see the wave behavior. If we can construct some grating or some structure which the wave can interfere. So before coming here, let me just go a little bit back to the Braggs. This father and son pair, William Bragg and another Bragg, I forget what was the first name of the son. So William Lawrence Bragg and this was son Bragg. So they were working together actually, and they were working with X-rays. And they discovered that if you have a crystal and you shine X-ray light on them, you get diffraction only at certain angle and not all of the angles. And why? They postulated, and actually this was known from wave theory about 200 years earlier as well, and that is that if you imagine diffraction of X-rays, so they were working with X-rays, and since crystal is nothing but a periodic arrangement of atoms, that was something that was believed to be true by that time in 1910s. So if you shine light on them and light reflects back, for example, all of these, they act as tiny wave sources, and then the light goes back. So actually this is nothing but wave. So they knew about constructive and destructive interference of waves, and they said that we get maximum reflection at only certain angles, because if I only take two waves, number one, and an adjacent wave, this number two, and let's say this distance between these two atoms is d, and let me say that this angle is theta. So if this is theta, then if I draw perpendicular from here, this is also going to be theta. Because if this is theta, this is 90 minus theta, and this is perpendicular, so this is theta. Okay? D, theta, 90 minus theta, theta. So if this is theta, this distance, this one, this has to be d sine theta. And they said that this is the distance between these two waves. If these two waves are starting from here, they have the same phase here, and we know that
if there are, so if these two waves are going in the same direction, and if they have, they are in phase, we have constructive interference. If they are out of phase, for example, this crest falls here, then destructive interference will give us 0. So if these two waves which are going in parallel like this, if this difference of distance between the two is equal to some multiple of the wavelength, we should get constructive interference, and if it is not a multiple of this wavelength, we should get destructive interference. So that's why if we look at the spectrum, we only see diffraction, let's say at this angle, this angle, this angle, and this angle. And from that information, they were actually able to measure the separation of atoms in different planes, in different crystals. And for that, they actually got the Nobel Prize as well. But the idea of this explanation is this, that people already, yes? दो, हाँ ये देखें, ये है तो काफी सारी waves हैं. ये there are like millions of atoms here, and millions of waves are being diffracted. So if all the adjacent waves are only separated by an integer multiple of wavelength, so integer multiple of wavelength ये यहाँ पे है. अगर ये सारी की सारी एक wavelength आगे चली जाए, फिर भी जो पिछला crest और trough है वो दोनों aligned होंगे. ठीक है, अगर दो वेवलेंथ आगे चले जाए फिर भी अलाइंड होंगे, so we will have constructive interference. Yes. ये diffraction इसलिए है कि these are individual atoms and they are diffracting. So these two are words which usually mean, if you are considering a smooth interface, then you call it reflectance. If you consider individual particles, you call it diffraction. Okay, so this was the knowledge that Davis and Germer already had. So they said, if I take a crystal and I bombard it with electrons, instead of X-rays, I should see a pattern similar to this one. That if they are particles, they will scatter everywhere. Okay, imagine like big balls, like atoms on the ground, and small balls coming down, and if they are like particle in a regular sense, they will scatter in every direction because there is no wave with them. But what they saw, and he actually did this experiment which I am going to exactly replicate. Wave भी तो there is no electron here, it's only X-rays. Yes, so यहाँ से जो वेव निकल रही है, so this is a good question. ये कहते हैं कि यहाँ से जो स्कैटर होके एक्सेस जा रहे हैं, वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो किसी में भी जा सकते हैं. So this is a good point, and actually they do. So the waves are going in every direction, लेकिन कुछ डायरेक्शन जो हैं, उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और फर्ज करें जो इधर जा रही हैं वेव, ठीक है, उनमें हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या उनमें कंस्ट्रक्टिव हो. This is I'm just showing one direction. So they're actually going everywhere. और डिपेंडिंग ऑन द थीटा, कुछ डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कुछ डिफरेंट थीटा में डिस्ट्रक्टिव होगा. इससे तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो 10 सारे, ये भी एक्सरे है, ये भी एक्सरे है. ओके, सो इट मीन वेव्स बिहेव लाइक दिस, दैट दे स्कैटर प्रेफरेंशियली अलोंग ओनली सर्टेन डायरेक्शन. यस, कि ये जो वेव्स फर्ज करें ये डायरेक्शन कोई है थीटा वाली, ठीक है, इसमें अगर ले ये दो एडजेसेंट वेव्स जो हैं, अगर इनके दरमियान में डिफरेंस मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव होगा. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है. दिस कैन गिव यू द एंगल वेयर द प्रेफरेंशियल स्कैटरिंग शुड टेक प्लेस. M is 1, 2, 3, so this can be 0, 1, 2, 3, and so this is M. M0 जब होगा तो this is backward, और असल में जब आप इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं ना तो इस तरह से नजर आता है. You have a big light region in the center. This is the light which is being reflecting back, and then you can get like a circle here. So this is the next angle
where the constructive interference is taking place. When M is 2, you get another circle, and so on. But of course, crystals are more complicated than this, because there are multiple. There can be multiple arrangements. So instead of circles, you can also get a pattern where there are only dots in the pattern. So from that information, you can find out what are the other parallel planes. Like important चीज ये है कि if we have a wave, because of interference, we get constructive interference only along certain direction. That's a simple message. Because if we come to this experiment where I take a filament, I heat it with something, bulk का filament, इससे electrons भी निकलते हैं, and then you take some crystal here, जैसे उन्होंने निकल की crystal ली, and then ये जो electrons यहाँ से निकल रहे हैं, they accelerated them here. So electrons are coming down, and they actually had a potential of 54 volt between a nickel crystal and electron source. So when the electron excited, they had a detector, और उन्होंने detector different direction में vary किया, और detector से surprisingly what they saw was this: the number of electrons as a function of angle were maximum at the 0, of course, but then they were minimum, and then they were maximum again at an angle of about 50 degrees, and then there was another maxima, so on. So maximum number of electrons are being excited, being scattered at theta 0 and theta 50, and so on. So let's see how we can explain it using wave nature. अब अगर आपने associate अगर de Broglie की theory से explain करना है, so you have an associated wavelength lambda given by h over p. We need momentum. तो momentum के लिए we need its velocity. और velocity we can find from the number of volts. अगर 24 volts supply किए गए हैं, तो kinetic energy कितनी होगी? EV. So this has to be equal to gamma minus 1 mc square. तो यहाँ पे आप 54 volts put करें, electron की mass put करें, you will find the velocity. Let's call it some u. So once you have this u, you find the wavelength as h over p equal h over gamma mu, and for 54 volts, the answer is, I think, about 2.15 angstrom. Angstrom is 10 power minus 10 meter. So this is the wavelength, and for nickel, people already knew what the D is. So actually, I wrote it wrong. D is, this is 167, and for nickel, the difference between adjacent atom was already known, and this was 2.15 angstrom. Now, if you use this D and lambda in that expression, D is 2.15 angstrom sine theta, and for M1 and lambda is 1.67 angstrom, और यहाँ से अगर आप theta निकालें, this was about 50 degree and another Nobel Prize. Just for this simple example. Yes? So we'll get to that. So with this thing, so I'm sorry, this lecture and the next lecture, I'll build up things slowly. So at the end of the next lecture, you will have a complete picture. So please try to bear with me. So with this angle, and which matches quite excellently with the experiment, this new confusion started to sow in the scientific community in 1920s. That particles, which used to be thought of as particles, have some wavy nature as well, and waves, which for
after people thought, okay, now after Newton's corpuscular theory, which says that light is nothing but like a rain, where particles are like flowing down, people have finally settled to the wave theory of light, but suddenly there are some experimental evidence that suggests that it's particle, but it is also still wave. And now there was a lot of evidence of the particle nature of electron, and you know those evidences, right? From J.J. Thomson's experiment, first of all, you only get charge in discrete number. It's either 1e or 2e or 3e for particles which are ejected, and mass is also discrete, and they also had a momentum which they can roll like a fan type thing. So people thought electrons are particles, but now we know that electrons have wave. And actually, so people objected as well, a lot of them, that maybe electrons have charge and a lot of electrons are coming down, they're pushing on each other or pulling or doing something. So they said, okay, let's not perform experiment with electrons, let's perform experiment with neutrons. They performed the experiment with a neutron, and exactly the same hypothesis was proved again. Again, the neutron ke saath ek masla hai, how do you accelerate them? How do you accelerate neutrons? How do you accelerate them? Not how do you produce them. You actually accelerate them by heating. We don't want, because then they will go in every which direction. So if you have some source of neutron, you simply heat them, and because of heat, they will be going crazy in every which direction. Then you can sort them with some wheel and stuff like this, that only neutron with certain velocity pass through or whatever. So people were able to do this, the same experiment with neutron, and confirm the same thing. And in recent times, actually, there is another experiment which is performed with electrons or neutrons or protons, and even bigger molecules like carbon buckyballs, and even with small viruses, that smaller particles, they that double slit experiment which I'm going to discuss, they also have an associated. So up tak जो है वो हमारी conclusion ये है, from this experimental evidence we see that there is some type of wave behavior. अगर अभी तक हमने ये नहीं कहा, उस वक्त बल्कि confusion थी कि ये क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है, is it doing something like this, या इलेक्ट्रॉन यूं करके जा रहा है, or maybe electron is not there but its mass and energy spread like a wave. All of these conceptions are now considered to be wrong. The correct interpretation is, which I repeated last lecture, I'll repeat today, I'll repeat again, that all particles, electrons, photons, neutrons, protons, all particles which we traditionally call particles, they are particles in this sense that whenever you find them, they are found in lumps. Electron, when you finally catch one, it has a certain mass, certain charge, and that's why we call it particles. But when the electrons are coming from here and they are interacting with something, where will I find electron? Will I find it by assuming them to be particle or by assuming them to be wave? So the probability of being found will be given by the wave nature. So they are wave in this sense. Similarly, if we have, let's say, a two-slit experiment, actually, so this was the experiment which was performed by Huygens to prove that light is indeed a wave. So what he did, he had a light source. So and then there are two small slits, and these slits are also two sources. And he hypothesized, since these are two waves, and we can observe them on water very easily. So at the point where they will reach after traveling the same distance, we will have constructive interference. And when at a point where they reach after traveling a distance which is 1/2 of the wavelength, the difference in these two distances is 1/2 of the wavelength, we get destructive interference and we get a zero, and so on. And because of this pattern, he argued that this can only be shown by a wave. So that's why light is wavy. It has a wave nature. But let me actually take this experiment one step further
and do this with electron, which is actually now being done routinely. It can be done with electron, proton, or neutron, and the experiment always gives this result. If you have a lot of electrons, if you have a lot of electrons, and then you put a screen here, and you have two slits, one hole here, one hole here, and then you observe what happens. You shoot electrons either together or one by one. What happens is like this. You get an electron here, maybe you get an electron here, you get an electron here, 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 maybe here, an electron here, electron here. Yeah? So you count them one by one, slowly you build up this factor, which means, and if you imagine doing this experiment with light, and light which contains trillions and trillions of photons, you will almost have a continuous distribution of photons. So it means that the probability of being found of any particle, whether it is a photon or an electron or a neutron, is given by an associated wave, and it behaves in exactly the same way. But whenever we find it in full chunk. And this is actually the modern interpretation of these particle wave thing. There's no word invented in English yet, or Urdu or any language that actually describes what this thing is or what to call it. So, but this is what we call it. You can call it a wave particle, you can call it a quantum particle, or whatever. Whatever. The interpretation is what matters, and that is you find it in chunks and they have a momentum associated with them, but where you will find them is given by an associated wave and its amplitude square. Okay, let me now do a little mathematics which is associated with this, because you have to do some problems as well, not just talk. And to do that, we have to now establish a mechanism of representing wave mathematically. So far I have avoided this. Yes? Without any mass, and what we observe is associated wave. I actually didn't get what you were saying. इलेक्ट्रॉन की वेव की तरह वेव करते हैं और लाइट की वेव की तरह वेव कर रही है, लेकिन लाइट पार्टिकल की तरह भी वेव करती है. So can it be said that light is in effect consists of photons which are mass, which don't have any rest mass, and what we observe is there associated wave? Is there associated wave? We don't observe wave, okay? So this is one important thing. We only find photons and we only find electrons, but where we will find them is given by a probability wave. So actually the better name for the associated wave is probability wave, and that is what it really is. It only tells us the probability of finding something. Okay, so let me now introduce the mathematical framework for waves, and then we will come back to this double slit experiment. To represent a wave, to develop a mechanism, let's first see what a wave is. A wave is a variation of some quantity which varies in space and time. लेकिन इस तरह से, let's say, if you imagine water wave एक ऐसा फंक्शन है, अगर मैथमेटिकली करें तो ये स्पेशल फंक्शन है और टाइम के साथ साथ इट मूव्स. और या अगर आप एक जगह पे खड़े हो जाएं और टाइम के साथ साथ उस जगह पे वाटर का एम्पलीट्यूड मेजर करें तो उसका एक ग्राफ बना लें. So that is also something that moves in time in the same way. So it repeats itself in time. So it means that you have to have a mathematical function which has this property that if you plot it as a function of x, it repeats itself, and if you plot it as a function of time, it repeats itself, and it moves in space and time in periodic fashion. इस तरह का जो function है, we can construct like this. The simplest wave or plane wave is, let me call it
simplest wave, a better name is actually the plane wave, is something, let's say, is some constant sin r cosine of 3x plus 2t. Let me show you how this function behaves. First, आप उसके लिए, let's say, we plot it as a function of x. At t is equal to 0, this is nothing but sin r cos 3x. तो इसका plot क्या होगा? This would be something like this, right? So this is t is equal to 0. और अगर ये पॉइंट 0 है तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 2 पाई बाई 3. ठीक है, कोसाइन कहां पे रिपीट करता है अपने आप को? आफ्टर 2 पाई. तो इसका मतलब है जब 3x की वैल्यू 2 पाई होगी, so this repeats itself, which means x is equal to 2 pi by 3 है. कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर 3 हो तो ये होगा ना, अगर 2 होगा तो ये 2 pi by 2 हो जाएगा. तो यहां से बल्कि आप ये भी देख लें कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी. इसकी जो वेवलेंथ है वो है 2 pi by 3. तो इसका मतलब है कि x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, दिस गिव्स अस वेवलेंथ, अगर आप 2 पाई को इससे डिवाइड करते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है, हाउ व्हाट इज दिस फंक्शन एट t इज इक्वल टू 1. t इज इक्वल टू 1 पे ये देखें तो दिस इज sin r cosine 3x plus 2. अब इसका प्लॉट क्या होगा? कोसाइन 0 1 होता है, तो ये फंक्शन 0 कब होगा? when x is equal to -2 over 3. So it means that somewhere over here this part is here and then it repeats itself and so on. This point is nothing but -2 pi by 3. So this function has moved this much to the left. So this is a wave which is propagating in negative x direction. और इसकी स्पीड क्या है इस वेव की? ये 1 सेकंड में कितना मूव किया इस पॉइंट में? ठीक है ना, t1 पे ये फंक्शन ये हो गया, तो ये पॉइंट शिफ्ट हो गया 2 by 3. तो इसका मतलब है जो स्पीड है that is 2 pi by 3. More precisely this is called phase speed, क्योंकि ये जो फेज पॉइंट्स हैं सारे वो 2 by 3 1 सेकंड में लेफ्ट को मूव होते हैं. This is lambda per time period. Okay, so what's happened at t is equal to 2? ये देखें, ये फंक्शन है t0 पे, ये फंक्शन है t1 पे. px इक्वल टू, क्योंकि इसके ऊपर ये पीरियोडिक है ना, यहां से यहां तक ये 2 पाई डिस्टेंस होता है ना cos का. cos x का प्लॉट क्या होता है? ठीक है, cos x 2 पाई पे रिपीट करता है ना अपने आप को, sin x भी 2 पाई पे रिपीट करता है. तो अगर 3x होगा तो ये 2 पाई by 3 पे रिपीट करेगा. ठीक है, अब t2 पे जो फंक्शन है वो बनता है sin r cosine 3x plus 4 और एसेंशियली ये होगा. So this is again moving towards that. So आपको ये तीनों प्लॉट शो, और आप अगर किसी को यकीन नहीं है तो I think what they should do is plot these things themselves. आपको कोई ना कोई प्लॉटिंग का तरीका आता होगा, ये सॉफ्टवेयर, उससे आप प्लॉट करके देखें. So it means कि इस तरह का जो फंक्शन है, this actually represents a wave. तो ये t0 क्या है? t0 जो है it's a snapshot in time. t1 is snapshot in time. t2 is snapshot in time. And you see it's periodic in space. But we can also do the same thing in
by standing at one point. At x is equal to 0, this function is sin naught cosine 2t, और इसका प्लॉट क्या होगा? The function of time. So this is something like this. x 0 कर दिया ना. So I'm standing at the origin and viewing it as the time goes on. तो उसी तरह से ये इसका पीरियड कितना होगा? ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? ये होगा 2 pi over 2. And what is this? This is called time period. Phi. और अब बल्कि इसे ये x0 पे ना देखें, x1 आप यहाँ पे खड़े होकर ना देखें, आप x1 पे जाके देखें. It will still be periodic and the time period would be the same. जी, क्योंकि ये देखें t0 पे जो ये व्हाइट प्लॉट है, इसको मैंने t1 पे दोबारा से फंक्शन को देखा तो ये येलो प्लॉट हो गया, और येलो जो है, ठीक है. तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया 2/3. तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ पे 1 सेकंड में इतना मूव किया, तो यही इसकी स्पीड है. Speed is the distance covered in 1 second. Okay, so इसका मतलब है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन बाय द वे होता, अगर नेगेटिव होता तो सिंपली ये जो वेव है इसने यूं चल पड़ना. So यहाँ से, और अगर फर्ज करिए ये cos फंक्शन ही होता, साइन होता, that's also a wave. So इसका मतलब है cos या साइन या इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, कंडीशन सिर्फ ये है कि आर्गुमेंट इस तरह की हो. They will represent a wave, and they represent a wave because with time they simply remain the same but only shift either in this way or that way, and that is the property of wave. And not only that, अगर मैं general लिखूं psi is equal to let's say some psi naught cosine of kx minus omega t, तो wavelength क्या होगी? Wavelength will always be 2 pi over k, and time period will always be 2 pi over omega. कि जो भी नंबर k के साथ है, इसको बाय द वे वेव नंबर कहते हैं. 2 pi से उसको डिवाइड करें, you will have a wavelength. आप यहाँ से देख लें बेशक प्लॉट से, you can convince yourself. Similarly, जो भी t का कोफिशिएंट है, टाइम पीरियड जो है उसका 2 pi over that thing होता है. इसीलिए इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड का उलट जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है. और इसको वेव नंबर भी इसीलिए कहते हैं कि वेवलेंथ का उलट जो है वो वेव नंबर होता है. तो इसका मतलब है कि इसको वेव नंबर इसीलिए कहते हैं कि वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ का इनवर्स होता है. जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, इसलिए इसको मैंने फ्रीक्वेंसी और इसको वेव नंबर कहते हैं. तो वेव नंबर की दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि अगर आप 1 मीटर स्टिक पकड़ लें यहाँ पे और ये देखें कि 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, कितने साइकिल्स आए हैं, दैट्स योर वेव नंबर. ओके, सो इट मींस जी सारे करते हैं. देखें कोसाइन हो, साइन हो या इवन एक्सपोनेंशियल हो, they all represent waves. कंडीशन इसमें नहीं है कि ये कॉज है, ये साइन है. कंडीशन इस पे है कि आर्गुमेंट इस तरह की हो. ठीक है जी. It's an amplitude, so psi naught is just the amplitude, this one. So you represent waves like this, and let me now come back here. So the most general expression for a wave is this. Psi, let's say xt is psi exponential iota kx minus omega t. क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल को ओपन करें इसमें कोसाइन भी आता है और साइन भी आता है. और अगर आप रियल वेव की बात करें जैसे वाटर वेव, यू कैन ऑलवेज टेक इट्स रियल पार्ट. और अगर आप जनरल वेव की बात करें तो यू कैन रिप्रेजेंट देम लाइक दिस. And that is what we will actually be using to represent free particles. Free particles have a wave which extends from minus infinity to and goes to plus infinity. Remember, this cosine or sine, they don't start here. They start at infinity and go to infinity. So we will represent free particles with these types of wave function.
associated wave function, and we will define the probability of finding them as जिनकी velocity 0 है, they are in principle standing at one point, so they are not going to represent this. जी ये वाला तो so ये देखिए, this is nothing but sin r cosine kx plus iota sine, and this also represents a wave. This is also a wave. इनको ड्राइव तो नहीं किया, उसी को हाँ, ये सिर्फ एक कॉज है, साइन भी इसी तरह से वेव को रिप्रेजेंट करता है, और जो मोस्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन है प्लेन वेव की वो इस फॉर्म में है. Iota makes it complex, which means that इसको काफी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, but simplest explanation ये है that this is the most general way. You have a cause and sine. Iota actually is something that collects two things that are in quadrature. Okay, and for example, if you have something like this, and you also get to have a phase factor. ठीक है, जैसे अगर आप इसकी बात करें cos की या sin की, so this is also a wave. For example, if you have a situation like cos 3x plus 2t plus 0.1, so even this is a wave. ठीक है, so this can be written as like a real part of exponential 0.1 iota exponential iota 3x plus 2t. Iota is -1 square root. Physical interpretation directly, there's no physical interpretation to with iota. It's an imaginary part. So ये ऐसे ही है, आप अगर इसको यूं समझ, जैसे हम x और y hat इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास कोई वेक्टर है, आप यूं करके लिख लेते हैं, so there's x and y collecting two quadrature numbers. Yes, so that's why there's an iota. Okay, so let's now come to the double slit experiment, and try to work like eigens, or any person doing this double slit experiment. बल्कि उससे पहले, and let's say you have some source and the wave is coming, and then there is this slit here, and then this is the slit. So first you set an origin here, and you have a z-axis and an x-axis. Is this getting boring? Yes. Okay. Okay, so first करें, यहाँ से wave आ रही है. So ये जो हर slit है, this acts like an individual wave. कोई भी wave आ रही है. This wave is either a water wave, or it is an electromagnetic wave, or it is a wave associated with electron or proton or photon or whatever. ठीक है? आप सब लोग आपस में गप्पे लगा दें, मैं इधर जो है वो हफ्ता जा रहा है। नहीं, आपने बड़े सवाल किए, आपको मौका मिलेगा बाद में। Okay, so let's say we have these two slits. So यहाँ पे कोई पॉइंट है, कौन सी चीज? ये मैंने कहा है कि ये वेव है, आप इसको वाटर वेव इमेजिन कर लें, लाइट वेव या वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन और फोटॉन और व्हाटएवर. So every wave is going to behave like this. That, and these two sources are another source, two sources of wave. और इस पॉइंट पे जो हमें टोटल वेव मिलेगी वो होगी sum of this and this. The wave is reaching here from this source and this source. और इसको, इस वेव को हम लिख सकते हैं
as sum kr1 minus omega t, and the second wave is exponential iota this. तो ये वेव है ये ऊपर वाली स्ट्रिक से जो जा रही है, और वो जो वेव है जो नीचे वाली स्ट्रिक से जा रही है. And the intensity at that point is given by is proportional to the modulus square of this total wave, and we can find it by multiplying this complex number with its conjugate. So जो ऊपर मैंने लिखा है वो है दोनों वेव्स का सम, और नीचे मैंने लिखा है वहां पे इंटेंसिटी विच इज दी प्रोपोर्शनल टू साइन मॉड स्क्वायर. ये ऊपर वाली कैसे लिखी? जो पहली वेव से स्लिट जा रही है वहां पे फर्ज करें कि r1 डिस्टेंस है, तो वेव का एक्सप्रेशन है साइन नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के r1 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि वेव उधर को जा रही है ना. अगर प्लस हो तो वेव उल्टी तरफ चलती है, ठीक है. अगर प्लस हो तो x नेगेटिव x के लॉन्ग जा रही है, अगर माइनस x हो तो पॉजिटिव x के लॉन्ग आती है, ठीक है. तो अगर वहां पे आप सोर्स आप लिखना चाहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स दैट इट्स माइनस, और अगर वो आपने उल्टा लिखना होगा तो फिर प्लस लिख दें. नाउ अब इंटेंसिटी जो है इट्स मॉडुलस स्क्वायर which is the psi into psi star. Psi star is complex conjugate. तो complex का इसका conjugate इसका conjugate, और जहाँ जहाँ पे आयोटा है वो माइनस होगी. जी आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करें to find the magnitude, because the intensity of a wave is proportional to the modulus square of the associated wave. और कौन मतलब इसको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि मॉडुलस कैसे लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस. अच्छा, हमने क्लास में किया तो वहां पे आप लग करते थे रेसिडेशन में, हमें पता है. तो यहाँ मैंने देखे ये साई है, इसको इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया. बस ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जरा बड़ा है, ठीक है. सम फुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज आल्सो अ कॉन्जुगेट लाइक दिस. ओके, अगर आपके पास कोई नंबर a है, फर्ज करें 2 + 3 आयोटा, तो इसके मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है a into a star 2 + 3 आयोटा into 2 - 3 आयोटा. तो मैंने यही किया, साइन नॉट कोई अननोन है, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट मैंने इधर लिख दिया. बल्कि अगर आप आसानी पैदा करना चाहते हैं आप ये साइन नॉट 1 कर लें, इमेजिन कर लें कि दोनों स्लिट से जो वेव जा रही है दे आर बोथ हैविंग एम्पलीट्यूड 1 इनिशियल. तो उससे ये है कि ये सम है, ठीक है, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, दिस इज साइन स्क्वायर, एंड इफ यू वर्क इट आउट दिस इज अगर इनको मल्टीप्लाई ये इसके साथ होगा तो 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा के r1 माइनस के r2 प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस के r1 प्लस. तो चारों जो टर्म्स हैं वो मैंने लिखी हैं. पहली जो है when this multiplies with this आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है. दूसरे साथ करेंगे तो ये प्लस आयोटा ये माइनस आ गया, तो ये बन गया 2, और ये एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा हो जाता है 2 cos ऑफ k, और r1 माइनस r2 को लिख दे
यदि हमने रेस्ट्रिक्शन 1 में नहीं किया था तो आपकी स्लाइड आपको ना पता नहीं, इनको एक्सपेंड करके ऐड करते तो ये होगा, ठीक है। तो ये 2 कॉमन ले रहे, तो ये बन जाएगा 1 एंड डेल्टा आर इज R1 माइनस R2। ये आपके पास आ गया साई मॉड्यूलस पर। अब मैं इसकी जो डिटेल कैलकुलेशन है वो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देखिए, ठीक है। ये जो नंबर है, अब ये देखें, ये फंक्शन आपके पास आ गया cos स्क्वायर k डेल्टा r ओवर 2। तो अगर इसका हम प्लॉट करें, अभी हम देखते हैं कि क्या देगा। So this is 4 cos square k delta r by 2। ये जो k delta r by 2 है, ये तो यहाँ पे लिख लेते हैं k delta r by 2, और डेल्टा r क्या है? दिस इज डेल्टा r, ठीक है। ये जो है दिस इज डेल्टा r, और फर्ज करें कि ये जो एंगल है दिस इज सम एंगल थीटा, तो ये थीटा है, तो ये होगा कितना 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा। सो बिटवीन डेल्टा आर इज, और अगर इनका डिस्टेंस जो है दोनों स्लिट्स का वो d है, तो डेल्टा आर इज d, ये थीटा है साइन थीटा, k d साइन थीटा बाई 2। और अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिख लें तो दिस इज पाई d, ये k को मैंने लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा, सॉरी ये 2 कैंसिल हो गया। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जो रिजल्टेंट वेव है यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी का। और अगर इसको आप प्लॉट करें, दिस इज कोसाइन स्क्वायर, तो दिस इज अ फंक्शन लाइक दिस 2 पाई, ये 2 पाई ओवर लैम्डा होगी। तो k जो है इट इज 2 पाई ओवर लैम्डा, ऑलरेडी वी सॉ इट। सो ये जो कोसाइन स्क्वायर फंक्शन है ये इस तरह से होता है, ठीक है। सो इट्स अ मैक्सिमम हियर, देन मिनिमम, देन मैक्सिमम, देन मिनिमम एंड सो ऑन। सो इसका मतलब है कि जो हम बात कर रहे थे वहां पर कि एक्सपेरिमेंटली ऐसे होता है that let's say electrons or photons or whatever is coming in and we get a pattern like this. We can see mathematically that this pattern emerges because of the wave nature. यहाँ पे हमने hand waving से बात की, because if I take 2 waves originating from here, I add them up and find the intensity which is modulus square. इसको mathematical calculation डाल दूँगा वेब पे. So we get a function like this, which is cosine square pi d sine theta. So when theta is 0, this is theta is 0 here, we get cosine 0, which is 1, so we get a maximum. As we move away, theta increases. There is some minimum, then maximum, and so on. So इसका मतलब है कि जो पहली बात है कि जो हमारा mathematical framework है, this does represent this, and the second thing is that you can also find the width of this maximum and see that this is dependent on, sorry यहाँ पे wavelength है, so this is dependent on wavelength and d अगर आप ये एंगल फाइंड करना चाहें तो, ठीक है। ये फंक्शन में से 0 कहाँ पे होगा? नहीं, ये कोसाइन 0 तो 1 होता है,
कोसाइन 0 कब होता है? पहला 0 कब आता है? अगर ये थीटा 0 है, ये 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? When this argument is π/2. अब मैं साइज स्क्वायर की बात करूँ तो ये जो है पॉइंट, अगर आप ये निकालना चाहें ये डिफरेंस, तो जो हमारे पास ये फंक्शन है पाई d sin theta over lambda, this should be equal to π/2. So from there you can find this angle which gives you the width of this thing, which is, अगर ये sin theta को मैं just theta से replace कर दूं तो ये हो जाएगा पाई से कैंसिल हो गया, lambda over 2d. Sin theta को roughly theta कह दें because usually it's small, so then this is proportional to lambda over d. जी ये देखिए, ये आर्गुमेंट है कोसाइन स्क्वायर की, ठीक है? तो कोसाइन स्क्वायर 0 होता है when its argument is π/2. तो पाई से कैंसिल हो गया, and since theta is small, I approximated sin theta with theta, so this is lambda by 2d. जी जी तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये लेवल में भी ड्राइव किया हो. So now you see where it comes from. तो अब इसमें ये देखें कि ये जो पहला मेन रूट है उसकी जो विड्थ है it's proportional to wavelength and inversely proportional to the slit width d. हम इस पे मजीद बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जो फिलहाल स्टार्ट की वेकेशन छुट्टी का टाइमिंग हो जी. Okay, so let me continue with this thing and sum it up. And I have a video for you as well. तो वैसे ये भी तरीका हो सकता है कि हम लेक्चर की बजाय वीडियो नहीं चला दिया करें. Then I won't have to do anything. That's the easiest one for me. जी मैं रजिस्ट्रेशन काउंट कर रहे हैं. Okay, so let me just summarize it and then we can watch a little video. Summary ये है कि with experiment we have come to know this, that all particles irrespective of their nature, कि वो photons हैं, electrons हैं, neutrons हैं, they behave in this way, that उनकी जो probability of arrival है it's given by as if they are wave, but once we find them as particles. We find them as full lumps. ये नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन मिलेगा या क्वार्टर न्यूट्रॉन मिलेगा या प्रोटॉन का थोड़ा सा ऐसा मिलेगा. We find a whole proton, we find a whole electron, and we find a whole neutron. हाँ, उस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं. How does that uncertainty absorption work?
करने से पहले जो है वो एक आपको मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे डिस्कस भी किया है और कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जैसे ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है या जनरल रिलेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ों पे आप अगर YouTube पे जाएं तो देयर आर मिलियंस ऑफ वीडियोस। इवन इस टॉपिक जिस पे हम कर रहे हैं आप सर्च करें तो 100-200 आपको मिलेंगे, उनमें से 99% जो है दे आर गिविंग यू द रॉन्ग आंसर। सही बात, मैं कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं जा रहा है या मे बी इलेक्ट्रॉन स्मीयर्ड आउट। सो जो कॉन्सेप्ट्स जब आप वीडियो देखें, स्पेशली उन कॉन्सेप्ट्स पर जो कि समझना मुश्किल है और जिसमें मैथमेटिक्स कम और इंटरप्रिटेशन ज़्यादा है, उसमें हमेशा जो वीडियो है उसका सोर्स ज़रूर देखें कि जो बंदा बात कर रहा है वो खुद कितना लर्न है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए even common people have developed these videos for let's say high schoolers and middle class students. उसमें वो बातें इसी वेव पार्टिकल में कर रहे हैं, but they are doing it almost wrong. So जब भी आप इस तरह की वीडियो देखें तो वीडियो देखने से पहले try to see where the video is coming from, especially for these tricky concepts. So this one is actually from a very famous professor from Columbia University. We can get a pretty good feel for the double slit experiment and how dramatically it alters our picture of reality by carrying out a similar experiment, not on the scale of tiny particles, but on the scale of more ordinary objects, like those you find here in a bowling alley. But first, I need to make a couple of adjustments to the lane. You'd expect that if I roll a few of these balls down the lane, they'll either be stopped by the barrier or pass through one or the other slit and hit the screen at the back. And in fact, that's just what happens. Those balls that make it through always hit the screen directly behind either the left slit or the right slit. The double slit experiment was much like this, except instead of bowling balls, you use electrons, which are billions of times smaller. You can picture them like this. Let's see what happens if I throw a bunch of these balls. When electrons are hurled at the two slits, something very different happens on the other side. Instead of hitting just two areas, the electrons land all over the detector screen, creating a pattern of stripes, including some right between the two slits, the very place you'd think would be blocked. So, what's going on? Well, to physicists, even in the 1920s, this pattern could mean only one thing: waves. Waves do all kinds of interesting things. Things that bowling balls would never do. They can split. They can combine. If I sent a wave of water through the double slits, it would split in two, and then the two sets of waves would intersect. Their peaks and valleys would combine, getting bigger in some places, smaller in others, and sometimes they cancel each other out. With the height of the water corresponding to brightness on the screen, the peaks and valleys would create a series of stripes in what's known as an interference pattern. So, how could electrons, which are particles, form that pattern? How could a single electron end up in places a wave would go? Particles are particles, waves are waves. How can a particle be a wave? Unless you give up the idea that it's a particle and think, aha, this thing that I thought was a particle was actually a wave.
A wave in an ocean? That's not a particle. The ocean is made out of particles, but the waves in the ocean are not particles. And rocks are not waves. Rocks are rocks. So a rock is an example of a particle, an ocean wave is an example of an ocean wave, and now somebody's telling you a rock is like an ocean wave. What? Back in the 1920s, when a version of this experiment was first done, scientists struggled to understand this wavy behavior. Some wondered if a single electron, while in motion, might spread out into a wave. And the physicist Erwin Schrödinger came up with an equation that seemed to describe it. Schrödinger thought that this wave was a description of an extended electron, that somehow an electron got smeared out, and it was no longer a point, but was like a mush. There was a lot of argument about exactly what this represented. Finally, a physicist named Max Born came up with a new and revolutionary idea for what the wave equation described. Born said the wave is not a smeared out electron or anything else previously encountered in science. Instead, he declared it's something that's really peculiar, a probability wave. That is, Born argued that the size of the wave at any location predicts the likelihood of the electron being found there. Where the wave is big, that's not where most of the electron is. That's where the electron is most likely to be. And that's just very strange, right? So the electron on its own seems to be a jumble of possibilities. You're not allowed to ask, where is the electron right now? You are allowed to ask, if I look for the electron in this little particular part of space, what is the likelihood I will find it there? I mean, that bugs anyone, anytime. As weird as it sounds, this new way of describing how particles like electrons move is actually right. When I throw a single electron, I can never predict where it will land. But if I use Schrödinger's equation to find the electron's probability wave, I can predict with great certainty that if I throw enough electrons, then say 33.1% would end up here, 7.9% would end up there, and so on. These kinds of predictions have been confirmed again and again by experiments. And so the equations of quantum mechanics turn out to be amazingly accurate and precise, so long as you can accept that it's all about probability.